What are we gonna do today? हम घर में मौजूद चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि बाहर जाने की हमें जरूरत ना पड़े और घर में ही हम गेम्स बना लें। क्या लेंस हमें चाहिए? कुछ कार्डबोर्ड, सीजर्स, पेन, क्रेयॉन। क्या बनाने वाले हैं? एक्टिविटी है, उसमें हम बताएंगे बच्चों को मेनली सिखाने के लिए कि बच्चे जब चीख मारते हैं या आप बुबू, how do you do when you have to sneeze? You have to put hands on your face like this. Achoo! Achoo! And then you have to put hands. Little kids cough and sneeze everywhere. Even if it might take some time, it will help your child and you to stay healthy if your child learns to cover his face during cough and sneeze. Learning good hygiene skills should not be stressful at all. Let's have some fun with it. Play games or make art about coughing and sneezing can help them fully enjoy while learning good hygiene. Okay, you're done. But when you sneeze, then you have to put hand on your nose. See? Achoo! Like this. Now you're done. You do this. Hold this. Sit down. Sit down like this. Now you do. Again. Achoo! हमने दो कार्डबोर्ड होते हैं, इससे हमने दो पाँव काट, ठीक है ना? इन दो पाँव को काट के और हमें चाहिए इसके साथ थोड़ी सी ये जो बारबेक्यू स्टिक्स होते हैं, ठीक है? बारबेक्यू स्टिक्स अपने साथ बारबेक्यू स्टिक्स और हमें इसके लिए चाहिए टेप। Are you struggling to provide enough activities for your kids stuck at home? So here's another idea. तो मेरे पास स्ट्रॉज नहीं थी, तो किसी भी पेपर को रोल करके ऊपर की तरफ फुट के हमने ये दो पेपर रोल करके लगा दिए और दूसरे हमने ये जो स्टिक्स हैं ये लेके टेप के ऊपर हमने यहाँ पे स्टिक से चिपका दिया टेप को लाइक दिस हियर और दूसरी स्टिक बिल्कुल इसके ऑपोजिट ओके हमने ये एक इसके अंदर यहाँ से घुसाया और दूसरे को यहाँ से। नाउ यू वांट टू प्ले दिस गेम बुबू? Yes. Hey parents, you don't need expensive toys and structured activities to replicate an early learning program. Simple self-created activities help their imagination to expand and grow.